सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबडी फॉर टुडे सेशन। लेट अस स्टार्ट विथ शिबिर गीतम। सर्वप्रथमम शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम्। अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंस। अवधारणम सकारात्मक वाक्य। अवधारणम। संस्कृतम अति सरला भाषा। संस्कृतम अति मधुरा भाषा। संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सत्र में। So let us start our today's lesson. Before that, some questions and commonly पता नहीं है, people expect more. So somebody has written to me that will you be providing me the periodical PDF of every session. I think so. I made it clear earlier many times. The reason is those who are not undergoing the this thing, recording and all that, they are attending, no doubt, but their attention is into many things. So even in my live lectures, I have been announcing that only Varnamala PDF will be given, and then rest of the PDF, the important slides will be given after we complete our workshop. It was specifically said. So I had been repeating that earlier as well, I think so. And for that, people can refer the recording. They don't want to refer the recording. They have their own style of learning. Fine. Who are you to teach me how to learn? I have my own way of learning. Most welcome. I don't mind. But again, there is somebody, Gita Varti, ER 11, Marathi 12, Feb. What is that? Who is that person? I am removing the person without wasting the time, please. So please, Veena, you have to be very careful. Now coming to our subject was, I am giving you some way of learning because I have come across many problems. मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी पढ़ने के लिए, लेकिन बार बार अनाउंसमेंट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस उम्र में नहीं बताऊंगा। छोटे बच्चे होते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं और उनको एक्शन भी मिलता है, उसका प्रतिसाद भी मिलता है। They immediately get the response out of that. But we after some age, we start thinking that I have my own style. Why should who is Arjun to guide me how to learn? Up to you all. No problem. No problem. So I've been repeatedly saying, okay, those who are going through the recording, now there is a best chance you can recollect whatever it is said, and you have to keep the pace. यानी स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करते रहूंगा। मैं क्लास में बता रहा हूं, फिर भी ऑब्जेक्शन में वही पॉइंट पूछ रहे हैं लोग,
वहां पे, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं अभी किसी पे कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जिनको जैसा करना है करने दो, है ना। दुनिया है, जिनको जैसा करना है करने दो, जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे। जो एक मॉड्यूल को फॉलो नहीं करते ना, वो ज्यादा लंबे समय तक एक या दो शिविर अटेंड करेंगे, दे विल अटेंड ओनली 1 or 2 वर्कशॉप, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। आई गिव यू इन राइटिंग, आई गिव यू इन राइटिंग, क्योंकि दे विल स्टार्ट फीलिंग इट डिफिकल्ट। इंस्टेड ऑफ व्हाट इज टॉट टू अंडरस्टैंड दैट, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीखने की जगह पे और ज्यादा रिक्वायरमेंट दिमाग में आता है। यस, हम ह्यूमन ब्रेन है, हमारे पास सवाल बहुत आते हैं। तो बार बार मैं ये नहीं कहूंगा कि बचपन में जाइए, बचपन में क्या आप इसी तरह पढ़े थे क्या, हाँ बराबर है, ऐसे नहीं पढ़े थे वैसे पढ़े थे, तो फिर एडॉप्ट दैट स्टाइल। एनीवेज, नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जिनको जैसा करना है वैसा करेंगे। वेदशाला या अर्जुन का एक पर्टिकुलर तरीका है, हमारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, और उसी तरीके के वजह से वो आज तक जुड़े हुए हैं, आज तक जुड़े हुए हैं। एंड समटाइम्स इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब तक 25,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, प्लस 25,000 प्लस, उसमें से कम 10,000 एक्टिव है। तो वो अभी काफी शिविर अटेंड किए हुए हैं, दे हैव अटेंडेड मेनी शिविर्स, मेनी ऑफ देम आर रेगुलरली गोइंग थ्रू द यूट्यूब। Why it is so, I don't know. I repeat the same thing again and again. Even then, they want to repeat the class. When I ask them, they say every time we are learning something new. Actually, it is the same point, but you are understanding in a better way. That is the reason we have to repeat classes. Rest up to you all. अभी आज के विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो टुवर्ड्स आवर सब्जेक्ट टुडे। उसके पहले आई विल अनम्यूट एवरीबडी। हाँ, यानी प्लीज कंट्रोल योर माइक। नाउ यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, but let us be in a quiet environment so that everybody would enjoy the class. Coming to the essence of what we are going to study today, आज क्या पढ़ेंगे, तो उसके पहले एक बात समझ ले कि generally it is said in all major languages, not all languages, but in major languages, non-living things are kept in neutral gender. Try to get connected, please समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी निर्जीव चीजों को नपुंसक लिंग में डाला जाता है, परंतु भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है अपना, देर आर मेनी लैंग्वेजेस वेयर इवन द नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो हैविंग जेंडर्स, either they are in masculine gender or feminine gender or neutral gender. यानी पुल्लिंग में है, कभी कोई निर्जीव चीज, कभी कोई स्त्रीलिंग में है, और कभी कोई नपुंसक लिंग में है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वस्तुनि परिचय दे रहा हूं। वस्तुनि परिचय यानी देर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू शो यू so that you understand what is the why there is a gender difference and why it is a gender difference that is different, totally a different topic altogether. That comes when you go towards advanced, very advanced grammar. But किस प्रकार से होते हैं, और उसे normal, all the things are very commonly used, so the names of it and how the name has been originated, उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। So one thing before I go ahead, मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। All the non-living things in Sanskritam, I am concerned only with Sanskritam. What in your language might be different, I am not concerned. हाँ, उसके बारे में ये मंच पे हम बात नहीं करेंगे कि तमिल में ऐसा है, मराठी में ऐसा है, गुजराती में ऐसा है, हिंदी में ऐसा है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट बिकॉज वी हैव वेस्टेड क्वाइट अ गुड टाइम इनटू दैट। तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन संस्कृत। ओके, तो संस्कृत में
In Sanskrit, all non-living things are not in neutral gender. They are either in masculine gender or feminine gender or neutral gender. But all the things, all the objects or whatever it is that is falling in neutral gender are non-living. यानी नपुंसक लिंग, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूं, निर्जीव चीजों को संस्कृत में नपुंसक लिंग में नहीं डाला जाता। निर्जीव चीजों को भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग होता है, इट डिपेंड्स। परंतु हर एक चीज जो नपुंसक लिस्ट में डाली गई है वो निर्जीव है, दे आर नॉन लिविंग। देयर आर एक्सेप्शंस, उसमें भी एक दो एक्सेप्शन है जो हम आगे देखेंगे, दैट वी विल बी लुकिंग इनटू दैट मैटर ऑन आई वुड से मंडे, नॉट टुडे। Okay, so today you have to keep it in mind कि all non-living things do have gender. वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है। Now the first, I can start hearing the voice of the mind. अभी सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल में है, नपुंसक में है या इसमें है? तो जब आप बच्चे थे, when you were a child, at that time your parents used to teach you that this is masculine, this is feminine and this is neutral. No, na? With no. Obviously not. So during over the period of time you started understanding, oh fine, this comes under masculine, this comes under feminine, this comes under neutral. लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं लिस्ट बैठ के आपके सामने पढ़ना शुरू करूंगा। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, देयर आर 10,340 crore वर्ड्स इन संस्कृत डिक्शनरी। हाँ, तो संभव नहीं होगा, ये जन्म में भी संभव नहीं होगा। तो प्लीज जो संभव नहीं होता उसके बारे में ना आगे बढ़े। तो शैल वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ दे हैव कम? यस सर। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। Screen, let me allow me to say now. Saha kaha, saha kaha, saha chamasaha, saha kaha, saha chamasaha. Non-living thing, kept in masculine gender. Chamasaha, masculine. Chamasaha, visargaha asti. So saha kaha, saha चमसः, सः कः, सः दंत कूर्चः, कूर्चः यानी ब्रश, दंत ऑब्वियसली टीथ, सो टूथ ब्रश, दंत कूर्चः, सः कः, सः चमसः, सः कः, सः दंत कूर्चः। Now you will ask me another intelligent question. That sir, these are the modern things. ये आज के जमाने की चीज है। हाँ, तो नहीं, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। हाँ, यस, इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। देन तो उस समय चमस कहाँ था? इट इज द मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज। हाँ, विद द टाइम द नेम्स एड इनटू द डिक्शनरी ऑफ संस्कृतम। बट एज फार एज चमसः इज कंसर्न्ड, I will make it clear, in Charak Sahita, there is a mention about chamas. Chamasaha means spoon. That was during that time, it might be instrument of measurement. एक चम्मच ये लेना है, एक चम्मच वो लेना है. So there was a defined sign and all that. And later on, they might be using while eating or not. I don't know. There is no mention in that. So chamasaha, during those days, yes, it had a name. Because Charak Sahita clearly mentions this. माइक ऑन करेंगे सब लोग? क्या करेंगे या कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करेंगे सर। नहीं, ऑन है, और जिनका ऑन है उनको ही पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम अटेंड करते हैं, तो उनको शायद रूल्स पता नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं अभी आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, बस हंसते रहूंगा। वाई आई शुड इंक्रीज माई ब्लड प्रेशर। अब वापिस मुंह टेढ़ा हो गया तो घर वाले बोलेंगे एक तो मुफ्त में पढ़ाते हो और उसमें भी मुंह टेढ़ा करते हो, तो मेडिकल बिल हमें आता है। तो इट इज बेटर कीप इट कूल। नाउ कमिंग टू दिस दंत कुर्च। अरे सर, हमारे पुराने जमाने में देर वर दातुन, नीम का लकड़ी या मिसवाक की लकड़ी, या देर आर बावड़ के झाड़ जो गुजरात में यूज होते हैं, वो यूज करते थे। देर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग। दैट वाज नॉट द ओरिजिनल फॉर्म। इन द ओरिजिनल बुक्स ऑल्सो कुर्च, दंत कुर्च हैज अ मेंशन, it has been mentioned. Now the third word, sahakah, saha marjakah. Now interesting, this is the actually modern thing. ये तो आज के जमाने का है, वो उस टाइम पे नहीं था. That I will confirm. Yes, वो उस टाइम पे नहीं था. marjakah, marjakah means eraser. अभी आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, आई हैड अर्लियर ऑल्सो सेड, आई एम रिपीटिंग, द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन इज द क्वालिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन। मैंने बताया था संस्कृत में नाम मीन्स मीनिंग, मीनिंग मीन्स व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो हिंदी में कहेंगे तो कोई भी चीज या व्यक्ति हो, उसे संस्कृत में जो नाम दिया जाता है वो उसके उस चीज या व्यक्ति के गुण होते हैं, गुण होते हैं। मार्जकः। नाउ इफ यू बैकट्रैक द थिंग्स, मार्जकः, तो इट कम्स टू मार्जयति। मार्जयति इज द क्रिया, मीन्स इट इज एन एक्शन, वर्ब। वो एक वर्ब है, क्रिया है। मार्जयति मीन्स टू क्लीन। सा प्रकोष्ठः मार्जयति मीन्स शी इज क्लीनिंग द रूम। कथम, हाउ? तो ब्रूम होता है, झाड़ू होता है, झाड़ू से हम साफ करते हैं ना, तो ब्रूम, दैट ब्रूम वी हैव टू क्लीन द फ्लोर एंड ऑल दैट। So that broom is called, झाड़ू को कहा जाता है सम्मार्जनी। तो कथम मार्जयति, सम्मार्जन्याः मार्जयति, यानी सम्मार्जनी से साफ कर रही है। सम्मार्जनी इकारांत स्त्रीलिंग, मार्जयति is the verb. Now what is the instrument? Sammarjani means broom. Now this is marjakah. So obviously it is an object that is used to clean something. Am I right or wrong? Yes, sir. Right. Right. Yes, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आ गया। तो अगर मैं जब भी मैं कल बता रहा था, yesterday I was saying कि unknown person has come, he has seen the eraser for the first time and is asking sah kah, and I said sah marjakah. Why I replied sah marjakah? Because marjakah is in masculine gender, so I replied sah marjakah. So he need not go into details. He will absolutely understand that this is an object used to clean something. Chota hai, it is to clean something. Then he may touch and realize, common sense use karenge, and he will realize, acha, it is having a rubbery effect. Fine. It might be for some writing purpose or something. But it is an instrument to clean. That is a common sense. आपको कॉमन सेंस की बात आती है, तभी एक बात बताना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग. बिफोर 2016 आई यूज्ड टू हार्डली यूज माय कॉमन सेंस. हाँ, मैं बहुत कम मेरा कॉमन सेंस यूज करता था. सो एज अ रिजल्ट आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर, and I was trying to find out a problem not using my common sense. But after I went into the details of Sanskritam and all that, I realized, मुझे महसूस हुआ कि मेरी सामान्य बुद्धि बढ़ गई है.
I realized that my common sense has increased. Rather, it was there, but I started using more common sense because it was absolutely logical. What you require for common sense? For common sense, you require logic. And this was the language which made me realize, अरे बाप रे, इतने सारे problem में, whatever problem that I have faced in my life, I should have used my common sense here to solve it. But we don't do that. Do we? Do we? No, sir. That's the reason we say, common sense is most uncommon because they don't use it. So here, the element of that thing comes in. Going ahead is, now, sir, these are the modern things. Then how come the Sanskrit has created a word? Yes, there is a procedure. There is a procedure in which an instrument comes in front. एक सामने चीज आती है. For example, eraser came in front and they saw the eraser. They know the property of the eraser. So it is marjayati. एतत् वस्तुनि अक्षरः मार्जयति. यानी it is cleaning the मार्जयति. तो मार्जयति का मार्ज आ गया. Now there is a process. There is a group of people who do declare new words every 1 year or 2 years within the gap. It is not fixed. It is not that periodical. तो हर चीज प्रोफेशनल नहीं होती. तो उसमें ये आ जाता है कि भाई आज इतने सारे वर्ड्स हैं. दिस इज द बंच ऑफ द वर्ड्स दैट आर न्यूली रिलीज. टिल द टाइम इट इज नॉट रिलीज, you are allowed to use the English word. Now these words, then they come into a dhatu. What is dhatu? Dhatu is one particular what we call it, an alphabet. One particular alphabet characterizes, and there is a long procedure of calculation, and after that calculation they come to a incident and they consider that marjak. Now after marjak has come, then the linga is been attached and it becomes marjakaha. There is a procedure. So ye regularly, that is the reason none of the words were replaced. Dhyan se suniyega. Please listen it very carefully so that you will understand Sanskritam in a better way. None of the words in Sanskritam were replaced. यानी कोई भी चीज, कोई भी शब्द संस्कृत में बदली नहीं किए गए थे, लेकिन जोड़े गए थे. They were added. The same object having the same property had the same name which was old. हम example देखेंगे. Like chamasaha. Chamasaha, during that time also it was existing and it had the same shape and it was meant for that. So ultimately there was no replacement or no new word for spoon, eating spoon, tablespoon or teaspoon, and they came across the same name, and that is chamasaha. Similarly, dantakurchaha. But marjakaha was a new name, so they followed that system and came across marjakaha. Am I clear? So none of the words were replaced. ये शब्द की जगह पे ये शब्द यूज होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ. इसी के कारण, that is the reason there are 10,340 crores, 10,340,000 crores, 10,340, 10,340 crores of words in Sanskritam. Why? Because it was always added. None was replaced. In other languages, it was replaced. अन्य भाषा में replace हुआ था. English also, normally every language changes around within the period of 400 to 500 years. 400-500 साल में हर भाषा में एक परिवर्तन आता है, आता ही है. इसीलिए अंग्रेज लोग भी इंग्लिश को लेकर, शेक्सपियर के इंग्लिश को लेकर पीएचडी करते हैं. हम भी यहां पे हिंदी पे पीएचडी करते हैं. क्यों ऐसा होता है? संस्कृत में भी पीएचडी होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर ग्रंथ को लेकर और उनके खुलासे को लेकर, सब लैंग्वेज को लेकर नहीं होती पीएचडी. किसी ने वो, क्योंकि वो सेम है, तो वो आज भी उतना ही मॉडर्न है.
But if you say Shakespeare English is totally different than the modern English, what we are speaking. Our Father who are in heaven, the holy thy name, thy kingdom, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our trespasses as we forgive our trespasses upon us. Amen. ये मॉर्निंग प्रेयर है, मास में प्रेयर पहले ये बोला जाता है. Similarly, the same this prayer was changed. उसमें बदली हो गया. Our Father who is in heaven, the holy your name, thy name नहीं, your name. And accordingly, the prayer had the modern touch. You too, Brutus. अभी you also, Brutus. Two, T-O-O-2. We are hardly using that word, T-O-O. Either we might be saying, I love you too. Yeah, I wanted to. But in very few cases, we are using T-O-O. But if you go towards the Shakespeare English, Shakespeare के English में देखेंगे, तो T-O-O-2 was very often used. तो वो language में change आ गया. परंतु संस्कृत language remained as it is. It remained as it is, as far as spoken Sanskrit is concerned. Now going ahead with Vastuni Parichay. पता नहीं है how you will be correlating this thing, but it is important. Marjakah, Sahakah, Sah Marjakah, Sahakah, Sah Gajah, elephant. Sahakah, Sah Kakah, Gajah, Kakah. लेकिन सर ये अगर फीमेल एलिफेंट या फीमेल क्रो हुई तो फ्रॉम फार अवे कैन यू रियलाइज व्हाट इज द जेंडर? नो सर. हाँ, अगर कौवा आपके खिड़की पे बैठा है तो आपको लिंग पता चलेगा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? नहीं पता चलता. तो यूजिंग आवर कॉमन सेंस इन स्पोकन संस्कृतम दे से कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इन संस्कृतम, the name of any birds or animal has to be in masculine gender. You might be knowing feminine gender. Yeah, some animals are, you can distinguish. यानी थोड़े बहुत पशु ऐसे हैं जिसमें पता चल जाता है, जैसे सिंह हुआ, टाइगर, लायन हुआ, तो लायन में तो पता चल जाता है मेल एंड फीमेल. बट इन स्पोकन संस्कृतम इट इज ओनली मेल. सिंह, सिंह. बट they do have feminine form also, but they are generally used in literature or in writing or in that purpose. But when it is coming to spoken Sanskritam, it remains that, except two animals. That is, one is cow, gau, and second is bull, vrushab. Why they are away from this? Because we consider them to be a divine animal. यानी उसे हम दैविक पशु मानते हैं, इसीलिए उसमें लिंग होता है संभाषण में भी. ओके, अन्य पशु या पक्षी के लिए आप पुल्लिंग में जा सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, कोकिला या कोकिलह, यानी कोकिला is the female form of cocoon, कोकिला के लिए. तो आप बोल सकते हैं, फाइन. कोकिला, we generally have an impression कि कोकिला हमेशा फेमिनाइन रहते हैं. पता नहीं है, I don't know about it, so I will not focus on that. Now going ahead. सह कर दीपः, कर दीपः, torch. Kara deepaha. Kara means hands. Okay, kara means hands. Deepaha, torch. So this was not replaced, because in those days also references मिलते हैं कि where they used to use lantern. Lantern use होता था, फानुस जिसे कहते हैं, lantern. या समझ में आया lantern क्या होता है? वो नहीं हॉरर मूवी में आते हैं, आप कौन हो भाई, 20 साल बाद वगैरह मूवी अगर देखे होंगे तो वो लैंटर्न लेके आता है. दैट लैंटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड
Karadipaha, because it is holded in hands, isn't it? So this was not a new name, but an same object having the same purpose had an extension. So Karadipaha dadatu. So nowadays, obviously, you are not going to have panus. So obviously, you are going to give them torch. So that is how we have to understand what are the names and how they are formed in Sanskrit. Sahataha, saha vidyut koshaha. Vidyut koshaha. Yahan pe, there is a general misunderstanding that vidyut means electricity. Koshaha means storage. Means, for example, this is an object which is a cell. Now, ye cell, if it is storing electricity, तो आपको झटका लगेगा ना हाथ लगाते. Won't you get the shock if it is having electricity? Number one. Number two, it has been said that you can never store electricity. how वो बैटरी वगैरह फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, then you are changing the form. So vidyut in Sanskritam means energy. Vidyut means energy. So this is actually storing a particular type of energy, and this energy becomes, after it passes through a circuit, it becomes electrical energy. तो एनर्जी है, इसलिए विद्युत कहते हैं. लेकिन अन्य भाषा में भी विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. अन्य भाषा के लिए आई डोंट नो, बट इन संस्कृतम विद्युत मीन्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स एनर्जी. मंगल ग्रह के बारे में देर इज अ प्रेयर फॉर मार्स. धरणी गर्भ संभूतान विद्युत क्रांति संप्रभम, यानी फुल ऑफ एनर्जी. कुमार शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणामाम्यहम. तो वहां पे इट इज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट यू कैन से इलेक्ट्रिफाइंग एनर्जी मीन्स एब्सोल्यूट एनर्जेटिक, बट इट मीन्स एनर्जी. गोइंग अहेड, पता नहीं है आप लोगों के रिएक्शंस तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है. शायद ज्यादा बोर कर रहा हूं मैं आपको. Yes, No, sir. Please continue. No, sir. होता है. क्या होता है, देयर आर फ्यू पीपल हु से क्या है, बकवास कर रहा है, एक तरफ चीजें नहीं लिखा सर, है. ऐसा कुछ नहीं. No, sir. You have to feel Sanskritam. Okay, it's up to you all. No, Bodhi. Now, Vidyut Koshaha. Koshaha means storage. Sahakaha, saha Vidyut Koshaha. Sahakaha, saha Anil Koshaha. It is a storage. Koshaha. Anil means gas or air. Gas ya air. Anil. Anil generally is commonly used for gas. So Anil Koshaha, storage. Now your pocket, शर्ट का पॉकेट हो, आपके जेब जो होती है, शर्ट की जेब हो या पैंट की जेब होती है, ट्राउजर पॉकेट्स also, they are also called koshaha because it is the place of storage, isn't it? It is the, what is the purpose of the pocket? To store. So koshaha. So anil koshaha. Sahakaha, saha danda deepaha. Danda means stick. Deepaha, light. This is a new thing. तो उसको नया नाम आया, दंड दीपः, अनुनासिका, दंड दीपः, दंड दीपः. सो सह कह, सह दंड दीपः, अनुनासिका. सह कह, सह गोल दीपः, because it is bulb, it is round in shape. But recently, कुछ 10-15 साल पहले, hardly 10-15 years ago, China came up with CFL bulb. They had a crooked shape and all that. So, what would be the name of that? Obviously, Vakra Deepaha. Vakra means crooked. Deepaha. Instant answer क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? क्योंकि कल मैंने अष्टवक्र के बारे में उल्लेख किया था. At that time, I had specifically said, the reason I tell you why to go through recording is because every slide, every explanation is interrelated. They are, it is not a particular way, but it is a sequence.
It is not like, chapter 1, I have done this, but chapter 1, every word is connected with chapter 2, every word. So, Vakra Deepaha. So, here comes crooked light. So, Vakra Deepaha. Sahakaha, Saha Asandaha. Chair. Asandaha. Sahakaha, Saha Asandaha. Masculine gender. Now, feminine gender. So I know the object, so I will not ask the question in masculine because I know it is Talika. So I will ask Sa Ka. Sa Ka. Sa Thalika. Dining plate. जो थाली वगैरह हम कहते हैं, थालिका. आकारांत स्त्रीलिंग. सा का, सा थालिका. आकारांत स्त्रीलिंग. यानी whenever it is a feminine gender, जब भी वो स्त्रीलिंग में आता है तो आकारांत और इकारांत को बाइफरकेट कीजिएगा. डू स्टार्ट बाइफरकेटिंग आकारांत एंड इकारांत. तो सबकॉन्शियस माइंड में इट इज आकारांत स्त्रीलिंग. सा का, सा शाटिका. शाटिका मीन्स साड़ी. जो हम साड़ी पहनते हैं, शाटिका. आकारांत स्त्रीलिंग अगेन. सा का, सा शाटिका. सा का, सा अग्नि पेटिका. पेटिका means box. Agni, fire. So fire box, obviously match box. So सा का, सा अग्नि पेटिका. सा का, सा अग्नि शलाका. दंड अलग है. दंड means stick, big one. And this is shalaka, small stick. Agni shalaka. So it is something like matchstick. It is a matchstick. Now toothpick. अगर दांतों के लिए हम जब यूज करते हैं, दंत शलाका. दंत शलाका. यानी the stick that you use for cleaning your teeth. दंत शलाका. अग्नि शलाका, matchstick. सा का, सा जवनिका. आकारांत स्त्रीलिंग खलु. जवनिका. अग्निशलाका, अग्निपेटिका. आकारांत स्त्रीलिंग. जवनिका. नाउ जवनिका मीन्स कर्टन. डोर्स एंड विंडोज पे जो कर्टन लगाते हैं. बट जवनिका हैज मेनी अदर मीनिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, योर मोबाइल डिस्प्ले, इट इज जवनिका. Your laptop or computer display, javanika. The movie, when we go to see the movie, the screen that we see, javanika, screen. When we give presentation and all that, there is a white screen, javanika. They are also called javanika. So actually, what is the purpose of curtain? It is a screen, isn't it? To conceal something, to have your privacy, you use it. Don't you feel so? So similarly, screen, what we call it in English, is javanika. Screen can be on window, on door, or even in a theater, or even on your laptop or this thing, mobile. Everywhere. Javanika. Display. Agre. सा का, सा उत्पीठिका. उत्पीठिका. पीठिका. त is half. So उत्पीठिका. आकारांत स्त्रीलिंग. उत्पीठिका. Table. These are working table, desk, जिसे working desk वगैरह कहते हैं. DESK desk. There are उत्पीठिका. Even dining table. भोजन उत्पीठिका. Bhojan utpitika. The desk that is used or table that is used for eating your food. Dining table, what we say. So that is Bhojan utpitika. Sa ka, sa churika. Obviously, we know. Churika. Churika kim karoti. Churika Chiddayati. Chiddayati means it cuts. Chiddayati.
इसलिए छुरी का. सा का सा सौंचिका अनुनासिका अस्ति. सौंचिका सौंचिका संचय करना. What is the purpose of the file? To collect the papers, to protect the papers, isn't it? Sanchay karna, to collect. Sanchay. In Hindi also, what is sanchay karna? To collect, isn't it? So what is this instrument? What is the purpose of this instrument? To collect the papers, important papers hai, kuch bhi hai. So it is called saunchika. In modern time, the plastic folders and all that things, office file, patli file, any material is also called saunchika. Saunchika. Folders ko bhi saunchika kehte hain because it is meant for keeping something. Am I right? Yes, sir. Yes, yes, Guruji. Yes, sir. Astu. सा का सा कूपी इकारांत स्त्रीलिंग. कूपी. सौंचिका आकारांत स्त्रीलिंग. कूपी. So it is ikaranta striling. Saka, sa, kupi. I mean, this is very common word. Kupaha, masculine. Kupaha means well. Kuwa. Pani ka kuwa jo rehta hai, the well, water well, that is well. So it is also called kupaha. So what is the purpose of that kupaha? To store liquid. Pani always nahi. It means to store liquid. And it is cylindrical in shape. Cylindrical in the shape because the volume of the water is very high. So it does not break the wall. The pressure is equally divided on the circular surface of the bottle. Yahi description hai na? I think so. Engineering wale jo bhi honge wo. So isliye that is the reason it is circular in shape. But yes, nowadays you get square bottles also. You get rectangle bottles also. But they are all called kupi. Not necessary it should be with glass. It can be plastic, paper, any material. Kupi. The object that is used to store liquid. Kupi. Ikaranta striling. Kupi. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Agree. सा का सा घटी. सा का सा घटी. सा का सा अनिल चुल्ली. यहां पे ध्यान दीजिएगा. ल इज हाफ. यू हैव टू प्रोनाउंस. चूली मत बोलिएगा. चूली बोल देते हैं काफी लोग. सम पीपल दे से चूली. अनिल चूली. चूली नहीं है because it has a half ल. So chulli. Anil means gas. Chulli means stove. Gas chulli. Gas stove. Lekin if there is something like tandoor or अंगेठी या शिगड़ी जिसे कहते हैं, जो कोयला या लकड़ा डालने से बर्न होता है खाना वगैरह पकाने के लिए, that is only chulli. That you call it only chulli. चुल्ली की बात आती है. I tell you very frankly, in that 330 batch, the participants were so excited that it really took me very long time to explain this point. They were very excited. They wanted to know more and more. They were very interactive. Yahan pe, okay, you all are taking it in your way, but these are the things. Fine. Now, regarding chulli, I will tell you one beautiful thing was, during olden days, पुराने ज़माने में, और आज भी, even today, in some places, very few places in Punjab, every village has a common tandoor. Common tandoor. और इसके, the evidence were found even in Harappa and Mohenjo-daro civilization. During that also they found that there was, no doubt it had a drainage system, sanitation system वगैरह था. There was well placed. But one more beautiful thing was, every village had its own common tandoor. So the ladies of the house, they will all gather. सब्जी वगैरह घर पे बना देते हैं. They can cook their this curries and all that thing at home. And they used to bring that
चपाती का या पराठे के वो जो फ्लोर वगैरह रहता है वो बना के लेके आते थे. And all the women of the village, they used to sit together, they used to chat, common, normal. उनके लिए friendship है, so exchanging each other's view, discussing their problems or sharing their good things. And they used to make this thing and put it in the common tandoor. So accordingly, they can prepare. There were two reasons. One was so that the ladies of the house can socialize, number one, which is very much required. And number two is so that tandoor, because it takes very long time to really cook a chapati or a paratha, so it takes a longer time. ज्यादा समय लगता है तंदूर ये अपना चपाती या नान वगैरह बनाने के लिए. तो वो क्या करते हैं, ज्यादा धुआं वगैरह ना हो, because of the, you know, to keep the environment very clean in the house, there is no more smoke and all that. They used to have this thing in common place. And they used to be little bit far away from the residential area. Thoda bahut. That was the purpose. But it was during those days. Nowadays, there are hardly any fumes. Or iske saath saath chimney, electrical chimney and all that things have come. Electrical chimney bhi milne lagi hai. To ghar mein धुआं तो नहीं होता है. Generally. Exhaust fan वगैरह आ गए, तो उसमें धुआं वगैरह नहीं होता. Okay. So now, going ahead is अनिल चुल्ली. सा का सा लेखनी. Lekhani means the instrument to write which uses ink. यानी pen, ball pen, gel pen, markers and all those things which use ink for writing, they are called lekhani. यानी जब भी and don't be surprised, it was not always that feather डाल के वो लिखा जाता था. That was calligraphy during that time. But the instrument filling up the ink and writing is very much available since thousands of years before. Believe that thing. And they used to have natural ink. There are some seeds that are available. If you crack that seeds, अंदर से एक black color का रस निकलता है. And that रस, that juice is meant for writing. If you remember, there are laundry marks होते हैं, laundry वाले use करते हैं. There are laundry label, किसी ने observe किया हो तो. Why I am going unnecessary when you are Yes, sir. I am forcing you all to hear Yes, me. sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. We We take noticed time to open the unmute and mute. naughty, yeah. So you are. No. We are engrossed in listening what you are saying, and by that time, yes, it is like this. To go to, it takes a time to go and unmute and say yes. We say yes, but it was unmuted that time. it's like a buzzer round. Yeah, buzzer round. Yes. Kaun banega crorepati? Press the buzzer. Anyways, I'm really sorry. Can't help it. I can understand your feelings. But yes, now what is that ink, laundry ink? I used to see in my childhood that laundry guys used to have some small seed and they used to puncture it with pin and all that. और वहां से कुछ रस निकलता था. There was a black ink juice that used to come out, and he used to apply that lakdi. He used to use the stick. He used to dip that stick in that ink and write it on the label so that it was unwashable. You cannot remove that mark. So, Miss, these are jambu ka ras, the juice of jambun. अभी तो जामुन की सीजन है. Now there is a season of जामुन. काला जामुन. काला जामुन. और काला जामुन का एक there is one speciality. If it falls on your clothes, the color will not go. Yes. Permanent color हो जाता है. Dye. Yeah, that is the reason I have seen के बहुत सारी areas में, especially I stay in Kandivali. Kandivali has many जामुन trees. और लेडीज लोग क्या करते हैं, दोपहर के वक्त वो छाता लेके निकलते हैं. दे हैव टू गो फॉर वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट, फॉर शॉपिंग एंड ऑल. दे यूज दैट अम्ब्रेला. तो
in one evening, I just asked one of the old lady, Masi means auntie, why are you using umbrella? There is no sun. बोलता है बेटा, I have to take care of from the falling jambun. If it falls on my sari, the color will not go away. Yes, true. So they use that umbrella. So even that, the juice of jambun is also used as ink. That is mentioned in Vedic books also. So lekhani, the instrument that uses ink. Ikaranta striling. Lekhani, ikaranta striling. Ankani, sa ankani, anunasika, ankani. Ankani means pencil. Sir, ये तो modern word है. No. The use of lead for writing has been clearly mentioned in Rig Veda. Rig Veda, it has been clearly mentioned the purpose of using lead for writing and how to purify lead and mercury has been mentioned. So we were advanced. हम लोग अनपढ़ नहीं थे, हमें अनपढ़ बनाया गया. We were forced to make it be unpad. Like something, independence ke baad, there is a resolution that is passed and under section 30A that comes into the picture, and Hindus were not allowed to make their universities. They were banned making their universities. Yes, sir. 30A. હવે એના પર ચેન્જીસ આવે છે ધીરે ધીરે. No, it will take time. क्योंकि opposition doesn't want Hinduism. चलता है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, ठीक है. Now let us go ahead. सा का सा अंकनी, सा का सा कर्तरी. Now again here, कर्तरी किम करोति. What does कर्तरी do? कर्तरी क्या करता है? कर्तरी किम करोति. कर्तरी वस्त्रम कर्तयति. कर्तयति, कर्तयति मीन्स कट कर रही है, तो कर्तरी कर्तयति. देखा आपने हाउ द व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट? टू कट. सो कर्तरी. दैट इज हाउ वी हैव कम हियर. सा का सा कर्तरी, ईकारांत स्त्रीलिंग. तत् किम, न्यूट्रल जेंडर. तत् किम, तत् संगणकम, अनुनासिका संगणकम. ये तो मॉडर्न है. आई ऑल्सो एग्री, दिस इज मॉडर्न. नाउ संगणकम मीन्स साथ में साइमल्टेनियस कैलकुलेशन मशीन. Computer does many things at a time, isn't it? It reduces your time. So, नहीं. Yes, sir. Yes, sir. शिवानी तो तुरंत हाँ बोलेगी क्योंकि पूरा दिन कल्पेश वही करते रहता है. He does many things at a time, है ना. काम भी करते हैं, साइड में व्हाट्सएप भी ओपन है, उसके साइड में दूसरा विंडो फेसबुक का भी ओपन है, तीसरा इंस्टाग्राम का भी ओपन है. फेसबुक इंस्टाग्राम ए બધું ના હોય. ना હોય. सतनाम साठी. सतनाम साठी सर. तो असु आगे चलते हैं. तो इट इज संगणकम, साइमल्टेनियस कैलकुलेशन मशीन. तत् किम, न्यूट्रल जेंडर. तत् किम, तत् शूर पत्रम. शूर पत्रम. शूर मीन्स शार्प, तेज, धार वाला. पत्रम मीन्स आइदर पीस ऑफ मेटल और पीस ऑफ पेपर. पत्रम. पेपर को भी पत्रम कहा जाता है, एंड शीट ऑफ मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड पत्रम. बट व्हाट कैन बी शार्प, व्हाट कैन बी शार्पन? आप धार किसको लगा सकते हैं? कागज को या मेटल को? पत्रे को. मेटल को. पत्रे को करते हैं. पत्रम, पत्रा. सो पत्रम, पत्रे को या मेटल को. सो ऑब्वियसली शूर पत्रम. हाँ, ये चीज मॉडर्न हो सकती है, नहीं तो पुराने जमाने में होते तो ऋषि मुनि दाढ़ी क्यों बढ़ाते, है ना. काफी लोग कहते हैं वैसा, लेकिन ठीक है. शूर पत्रम, दैट इज शार्प. बट इफ यू से ब्लेड,
in English, does the blade define the purpose of the object in any way? I have to show. If I say battery, I have to show battery. Battery cannot define what it is. What is the purpose of the object? And they have copied many things from many other languages, especially Sanskritam, like toothbrush, yeah, literal translation. Literal translation. Like there is one more example of local train. Local trains, earlier there were steam engines. So it was called Dhumashatakam. Dhumashatakam, Dhum means smoke. So Dhumashatakam, steam engine. After that, steam engines were replaced, diesel and electric engines started. So it became rail yanam. Now, rail is a Sanskrit word. मैंने शायद बताया था ये. I have mentioned this. Rail means parallel bar of iron. Parallel bar of iron. उसको rail कहा जाता है. So, rail yanam. But after that, rail yanam were generally used for going from one city to another, or from one state to another. Thereafter came a concept called local trains, like in Bombay, Kolkata, Chennai. There are local trains that are available that shuttle between the specific distance. यानी एक पर्टिकुलर एरिया में वो रूट पे वो कंटिन्यूस आते जाते हैं. They are local trains, metros, monorail. This started coming up. So they said that now we have to distinguish even them. So it gave a new name, and that was very recently that name was allotted, only 2 years back, and that was called Twarail. Twarail means Twarik means immediate. Twarik rail. Twarail. Twarail yanam means it comes frequently, like shuttle service. So train ka Twarail bana. How many of you know? Twirl, na? It's ta, na? Ta. Okay. Thank you, sir. तू काय ऐकलंस स्मिता? Twirl. नाही नाना येऊ નથી हा. Twirl. त છે त्वरेल. त्वरिक रेल. त्वरिक रेल. Okay. Thank you, sir. Most welcome. Now you must have heard about magistrate name. Magistrate. कभी किसी ने सुना है magistrate? हाँ, yes, सुधा. त्वरेल था हा प्लस वा है ना? Sorry. त्वरेल यानम वो था हाफ और वा है क्या? हाँ बराबर है, हाफ ही होगा ना, जैसा बोलूंगा वैसा ही लिखोगे. हाँ, तो उन्होंने ऐसे पूछा त्वरेल या उन्होंने कुछ और सुना था. So it was what she had asked. She also knew it was half. Yeah. त्वरेल मतलब मेट्रो. मेट्रो हुआ, मोनोरेल हुआ, लोकल ट्रेन्स हुआ. आप कोलकाता से हैं ना महोदय सेन बाबू? हाँ जी, मैं अभी मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता हूँ. दिल्ली में मेट्रो को आप बोल सकते हैं. दिल्ली में लोकल ट्रेन नहीं है. बंबई में, आपके कोलकाता में देयर इज, हावड़ा पे नहीं है वो लोकल ट्रेन जाती, उसे भी त्वरेल कहते हैं. मोनोरेल होता है, बंबई में मोनोरेल है, तो मोनोरेल इज ऑल्सो कॉल्ड त्वरेल. मैजिस्ट्रेट नाम सुना है आप लोगों ने? मैजिस्ट्रेट जी सर. वेरी कॉमन. एक्चुअली इट इज 100% संस्कृत वर्ड which means Manyastret. So Manyastret became Manyastret, and Magistrate. Okay? Yes, sir. So Manyastret. Manyastret का मतलब होता है the respected person who gives an order. जो जिनको authority है to issue an order. But a respected person. He is respected. So Manyastret. Interesting. Going ahead. Tat kim, tat pushpam. Obviously, we know. Tat kim,
tat snan fenakam. Snan fenakam. Snan means bathing. Bathing. Clear on my license. So actually, I used to live in New Jersey, and I moved to California. Snan means bathing. Fenakam means soap. So bathing soap. Snan fenakam. Fenakam means soap. You must have seen, that soap for washing the clothes. हाथ में पकड़ के Yes, sir. Yes. वस्त्र फेनकम. Vastra Fenakam. It is called Vastra Fenakam. You must have, but sir, अभी तो washing machine आ गए, powder use होता है, powder. Churna Fenakam. Churna means powder. Churna Fenakam. Sir, automatic machine में they have started using that liquid soap. अभी वो liquid soap आने लगा है, automatic washing machine. जल फेनकम या द्रव्य फेनकम. कर फेनकम, hand wash. या हस्त फेनकम या कर फेनकम, hand wash. Sanitizers. हस्त फेनकम, हस्त जल फेनकम. यानी हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप, जल फेनकम. एम आई क्लियर? तो स्लाइड एक दिखाया आपको, चीजें कितनी बताई मैंने? 5. यस गुरुजी. यस गुरुजी. आगे चलूं या किसी को कोई पूछना है कुछ भी? सर हम नहीं, आगे चलो. हाँ पूछने, कोने पूछू છે? हाँ सर. શિવાની ને કે જીમી ને? हाँ જીમી તારો માઈક ઓન છે, તારે પૂછવું છે કઈ? સર મારે પણ પૂછવું તો. હા શિવાની પૂછ. આટલા બધા યા શિવાની. આટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો વાસણ ઘસવાના સાબુને શું કહેવાય? શું કહે? વાસણ ઘસવાના સાબુને શું કહેવાય? વાસણને શું કહે? પાત્રમ, પાત્ર ફેનકમ, પાત્ર જલ ફેનકમ. ओके, बाकी रहती तो अरे उसको बोलना जरूरी है, यूज यार, कम ऑन. हाँ यस ओम. ओम हाथ ऊपर दिखाएं. हाँ जी. नमो नमः सर. नमो नमः. हाँ सर, वो अनिल चुल्ली को हम वायु चुल्ली भी कह सकते हैं ना? ना, वायु चुल्ली कैसे कहेंगे? हवा से चलता है. अनिल गैस भी होता है. वायु इज 100% गैस, अरे 100% एयर. ओके. Anil is gas or vayu, not vayu, actually oxygen के लिए. So we call it ये हवा. हवा नहीं होता. It is what is oxygen के लिए प्राणवायु कहा जाता है. Actually in Sanskrit it is called a प्राणवायु. So it is used only for that. अगर वायु चुल्ली बोल देंगे तो हवा से थोड़ी चलता है. Don't do that. अस्त अस्त अस्त. अग्रे. तत् किम तत् पीहित पत्रम. पर्पसली इसी के लिए मैंने येलो एनवेलप रखा है. पीहित का मतलब होता है विच इज हिडन इनसाइड. सो यू हाइड समथिंग इनसाइड. इट कैन बी ऑफ एनी कलर, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, पिंक, एनी कलर. सो एनवेलप ऑफ एनी कलर इज कॉल्ड, एनवेलप इज कॉल्ड, ये जो लिफाफा रहता है, लिफाफे को कहते हैं पीहित पत्रम. पीहित पत्रम वेरी सिंपल है. पीहित यानी पिधायति, यानी उसको छुपाने के लिए. कीप समथिंग, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कीप समथिंग. पत्रम स्पेशली विच इज ऑफ पेपर मटेरियल, यू कीप इट इनसाइड इन एन एनवेलप. सो पीहित पत्रम. हाँ यस Gori. Namo Namaha. I Namo want to Namaha. ask that actually, if you want to not hide at the inside the envelope, so what do you call that kind of envelope? Keep the envelope open. Keep the envelope open, but you are using envelope to keep something, isn't it? Yes. So if you don't want to hide it, don't seal it. Keep it open. But it will be called Pihit Patram only.
सर आई थिंक वो कार्ड 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 पोस्ट बोलते हैं ना उसको, जो ओपन वाला पोस्टकार्ड। होता है, पोस्ट कार्ड, सॉरी, हाँ, Postcard. उसके बारे में शायद। पोस्टकार्ड के लिए नहीं, पोस्टकार्ड के लिए तो ये हो गया अपना, सॉरी, पोस्ट को डाक नहीं कहते, सॉरी, एकदम ही दिमाग से निकल गया। पोस्ट, सॉरी, आई विल टपाल, सॉरी, टपाल बोलते हैं पोस्ट को। टपाल ना, टपाल આપણા ગુજરાતીમાં બોલે કઈ બી, હા સ્મિતા, કઈ બી, હા, कुछ भी बनाते हैं। Simply Patram is okay, sir. Patram, it is normally Patram it is is called okay. Patram only, but it is postal Patram. Postal को क्यों मैं भूल रहा हूँ? Because डाक पत्र, हाँ, डाक पत्र, डाक तो हिंदी में हुआ, डाक किया, डाक लाया, वो खत, गाना गा खत, रही थी। खत बोल सकते हैं, खत। खत खत तो पत्र। उर्दू शब्द है भाई। Okay. खत पत्रम कैसे उर्दू के साथ संस्कृत? नो नो, प्रेषक आई एम पत्र। सॉरी, आई एम प्रेषक पत्र, प्रेषक पत्र, डाक पत्र करते। प्रेषयति यानी टू सेंड होता है, टू सेंड होता है, तो यू कैन सेंड न्यूज़पेपर आल्सो, दैट डजंट बिकम अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के लिए है, प्लीज मुझे एक दिन दीजिएगा, आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट, वेरी फ्रैंकली आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट। सो पिहित पत्रम, नाउ शिरस्त्राणम तत् किम, इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोटेक्ट्स योर हेड। तो आज के जमाने में इट इज व्हाट वी कॉल इट हेलमेट, बट हर रीजन में देयर इज अ टर्बाइन, वो ये सर पे पगड़ी बांधते हैं, सो दैट पगड़ी इज ऑल्सो कॉल्ड, यू नो, हमारे सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शिरस्त्राणम। एम आई क्लियर? Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट यार, मेरे दिमाग में क्यों ऐसा ये हुआ कि आई कैन नॉट रिकलेक्ट वर्ड टोटली। सर वापस आप It is रिपीट something- करेंगे, मेरा हाँ जी? इंटरनेट शायद ये हो रहा था, तो मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला वो। नहीं वीडियो पॉज हो गया था बीच में। अच्छा, हाँ एक्चुअली हाँ, सर पत्रमच असेल, पोस्ट कार्ड कार्ड को पत्रमच, पत्रम, पत्रमच पत्रम ही असेल। कहते हैं, पत्रम ही हाँ कहते हैं, सर, क्योंकि पत्र पत्रम ही म्हणतो ना, कहते हैं, पत्र क्योंकि आणि पत्रम। पत्राणी या हाँ। पत्रालय इज पोस्ट ऑफिस। नहीं, उसके लिए भी एक वर्ड है, उसके लिए भी एक वर्ड है, आई एम श्योर, बिकॉज आई यूज्ड टू यूज दैट वर्ड। अचानक से, क्योंकि आजकल पोस्ट कार्ड भी कोई यूज नहीं करता ना। हाँ, संपत्र, संपत्रम, संपत्रम, पोस्ट कार्ड, संपत्रम, संपत्रम, पोस्ट कार्ड, आई यूज्ड टू यूज दैट वर्ड। सर इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे वाटतं। हॅलो सर, सरांचा व्हिडिओ पॉज झालाय। ओके, हाँ फ्रीज हो गई स्क्रीन, फ्रीज। तुम्ही पण नाही कोणी बघू शकत का सरांना? नाही नाही नाही. सरांचा व्हिडिओ पॉज झाला. तुझे कनेक्शन गेला असेल त्यांच्याकडे। नाही कनेक्शन आहे, बट व्हिडिओ में भी नाही दिसत। सर आहेत ऑनलाईन आहेत ते। हाँ लेफ्ट झालेत का सर? आय थिंक सो। कोणाकडे जर फोन असेल किंवा केलं तर जास्त बरं होईल, कारण माझ्या इथे तर दिसतच नाहीयेत सर. नाही लेफ्ट झालेले आहेत. I am sorry that I was disconnected from the laptop, and Okay, yes, okay. I am sorry that I am unable to log in from the laptop.
The internet connectivity has been lost. Just a moment, please. आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. yes, sir. बस सुनाई दे रही है. Please be online. Yes, sir, I can hear you. Yeah. Yeah, I am back again. Yes, sir. I am back again, please. Just a moment. जेवायला वाढू का? अरे क्या हुआ भाई, सब लोगों का वेकेशन चालू हो गया, सबके माइक ऑन हो गए? हाँ कि सर गेले असं झालं काय? हाँ सर चले गए चलो छुट्टी. ऐसा नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला. तर ऍक्च्युली मला वाटलं की माझाच इंटरनेट मध्ये प्रॉब्लेम आहे, सो आय वॉज सर्चिंग. तर मग सगळ्यांनी सांगितलं की तुम्हीच नाहीयेत म्हणून. तुझं नाव ठक्कर आहे आणि तू मराठीत बोलतो? मराठीमध्ये शिकले ना. अच्छा. काल माझा सुद्धा प्रॉब्लेम झाला होता, म्हणून मी आज परत चेक करत होते. काल युट्यूब आणि मग नंतर शेवटची 5 मिनिटं 20 मिनिटं युट्यूब वरून हे केलं. म्हणून मला वाटलं माझं तुमचा प्रॉब्लेम. हा पण आज माझा प्रॉब्लेम होता, काल बहुतेक तुमचा असेल. आणि मग काल मग शेवटी तुम्ही सांगितलं नाही का संपदा करून, पण ते मला तुम्ही कळत नव्हतं आणि माझ्याकडे कनेक्शन दिसत नव्हतं, अशी गडबड झाली होती. माझ्याकडे दिसतं, काय हरकत नाही. माझ्याकडे गडबड झाली. काय हरकत नाही. पाथे पात्रम यानी path यानी रोड. So the vessels, patram means vessels यानी patram. So the vessels that you carry on journey, pathe patram. See, such a logical word for this tiffin box was generally used during those days when you are traveling. But nowadays, we are using that in office also. Whenever we go to office and means our daily routine, we do carry, but that is also called pathai patram, because you are carrying the vessels along with you, isn't it? So pathai patram, जो पात्र यानी बर्तन, तो रास्ते में जो आप लेकर जा रहे हो आपके बर्तन, उसे पाथै पात्रम कहते हैं. वो ऑफिस ऑब्वियसली टिफिन बॉक्स हो गया. कितना सोचा समझा चीज है. But if I say in English tiffin, does that tiffin box mean anything? टिफिन जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा टिफिन बॉक्स यानी क्या and for what it is used. But here the purpose is absolutely clear. अस्तु, जैसे everyday morning there is a scene in every house कि पाथै पात्रम सिद्ध वा, मेरा टिफिन रेडी है क्या? तिष्ठतु महोदय, तिष्ठतु यानी रुकिए, तिष्ठतु पंचनिमिषम तिष्ठतु इदानीमेव सिद्धम करिष्यामि. Just now I am getting your tiffin ready. यानी wait. These are the common dialogues that we use. पाथै पात्रम सिद्ध वा. So now let us go ahead with tat kim tat pathai patram. Tat kim tat वातायनम. वातायनम यानी वातावरणम means atmosphere. Vatavarnam, that is a Sanskrit word used in many languages. So Vatavarnam means climate, atmosphere, or this atmosphere generally. But Vatayanam means the it is a particular object which allows the air to move around from outside to inside and from inside to outside. Vatayanam. It is not dwaram. You cannot enter that. It is not dwaram. It is vatayanam. It is specially for ventilation. Mic off कीजिएगा please. अस्तु, आगे चलते हैं. तत् किम तत् सोपानम, स्टेयरकेस. सोपानम यानी स्टेयरकेस. Nowadays we find it escalators, automatic चलते हैं.
Many railway stations have that escalators, metros have the escalators. Swachalit sopanam, swachalit, automatic staircase. Swachalit sopanam. Swachalit sopanam. That are staircase. Am I clear? Now, sopanam has another meaning also. Yes. Sopanam also has another meaning. Vayamatre प्राथमिक सोपाने संस्कृतम पठिष्यन्ति. हम लोग यहाँ पे बेसिक लेवल पे संस्कृत पढ़ रहे हैं. We are all here learning Sanskrit at the basic level. प्राथमिक सोपाने, that is level. But not floors. Floors does not mean level. Floors, attaha. Attaha, masculine word. Attaha. या अट्टम. अट्टम भी चलता है. इट कैन बी कॉल्ड इवन इन न्यूट्रल जेंडर. सो अट्टम या अट्टह. इन कन्नड़ इट इज द सेम वर्ड. अट्ट मीन्स लॉफ या मालिया जिसको कहते हैं. सो दैट इज अट्ट. एतत् भवने अहम सप्तमम अट्टे वसामि. भवनम मीन्स बिल्डिंग. So in this building, I am staying on 7th floor. Etat bhavane aham saptamam atte vasami. Am I clear with the sentence formation? We are going. Yes. Yes, sir. From Monday onwards, we will be concentrating on that. Very interesting. Oh, ma. You want to always appreciate. You have repeated so many times. So many times. You have rather been my energy. You are motivating me. Thank you. Tat kim tat sopanam. Tat kim tat syutam. Carry bag. Carry bag jo hota hai, that is syutam. Now this syutam comes also in masculine gender. You can put it syutaha or syutam. Both means the same. The carry bag, any material, cotton, jute, leather, plastic, paper, any material. It is syutam. Now, ladies' purse is also called syutam. Ladies' purse is also called syutam or syutaha or syutam. Either you can use any of the word. There is no problem. So once there was an incident out of the subject. I wanted a pen to write. So I asked my wife, "Lekhni masti wa?" So pen hai kya? हाँ, स्यूते पश्यतु, यानी पर्स में देखो. I opened the purse. और ऐसे ही जैसे ही ओपन किया, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था. It was something like, I compared that expression with यशोदा मैया को जब कृष्ण ने मुंह खोल के पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था. You remember that incident in our history? Sri Krishna opened his mouth and showed the whole universe. I had the same feeling when I opened my wife's purse for the first time. The whole universe is inside. Ladies पर्स को कभी खोलने का डेयरिंग करना चाहिए. हाँ, so please try to understand, it is the whole Brahmand over there. From safety pin to the sewing pin to what things you will find it in that. And I saw knife in my wife's purse. I said, "Why are you keeping knife? To murder somebody?" No, in case I want to eat fruit on the way, if I'm going somewhere, if I would like to eat a fruit, I will cut it immediately. Yeah. Always prepared. इसी के साथ यहाँ पे वस्तुनि परिचय खत्म होता है. With this, we are ending our वस्तुनि परिचय. I am not going to take another thing ahead. From Monday onwards, we will be picking up the things. Now, one more announcement. Tomorrow is Saturday. Saturday and Sunday is, as mentioned, it is an holiday. तो कृपया करके don't log in. काफी लोगों को मैं देखता हूँ. Suddenly, I start getting messages, Somebody has logged in Zoom, somebody logged in Zoom. मुझे आश्चर्य होता है, why you are wasting your time? Yes, Anand Mohoday, vadatu.
आप कुछ संगीत के बारे में बोलने वाले थे। किसके बारे में? राग राग और संगीत 2 दिन पहले की बात है। राग राग के बारे में? अरे मुख राग यानी ओष्ठ राग, मुख राग यानी पाउडर, ओष्ठ राग यानी लिपस्टिक। ना ना ना, संगीत के बारे में। हाँ, सारेगमपधनिसा. हाँ, it was regarding that स and all that उच्चारण that comes up, but वो तो ऑलरेडी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दी है ना. So जैसे हाँ, if you observe the wording of राग दीपक, you will find it it is, and Rag Kafe is quite mild. Rag Kafe is the Rag of midnight, and Deepak Rag is for Jwalan. So they have a different megahertz in that. जैसे कि राग काफे का मुझे पता है, नी सा रे रे ग ग म म प म प ध म प. अभी इसको पूरा आप वैल्यूज डालेंगे पूरे अल्फाबेट्स के, वॉट एवर वैल्यूज यू विल कम, आप देखोगे कि इट इज क्वाइट लो, आपके दिमाग को शांत कर देता है. ओके ओके. आनंद महोदय को म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छा लगता है. यू आर म्यूजिक प्लेइंग एनी म्यूजिक आनंद महोदय? हाँ, फ्लूटिस्ट है, प्रोफेशनल फ्लूटिस्ट. आप फ्लूट बजाते हो यार, क्या बोलना चाहिए उसके लिए? अभी आपको ये कहेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग का यूज कीजिएगा, इनहेल एज वेल एज एक्सहेल, है ना, दोनों करते हैं. फ्लूट में एक्सेल ही करते हैं. नाही, मी मला तर शिकवलं, त्यांनी सांगितलं अमुक स्वर असे असतात ज्याला इनहेल पण करावं लागतं. मी C9 वापरतो फ्लूट, मग त्यामध्ये त्यांनी असं मला हे केलेलं. बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट गॉन इन टू डेप्थ ऑफ इट. थोडं बहुत येतं, इंटरेस्टिंग. अस्तु, इसी के साथ आज का यहाँ पे हम खत्म करेंगे. हाँ जी सर, एक क्वेरी है मेरी. हाँ, एक सेकेंड, मैं